Jane friends, dear students, today we are going to discuss the multiple choice questions of chapter 8 Quadrilaterals. Means in this session we are going to study the 1 marks question related to chapter 8 which is Quadrilaterals. Right friends? Okay. So be ready with your pen and pencil. Note down each and every questions with their answers. Just see the first question. First question is given, in which quadrilateral only two sides are parallel? Two sides are parallel, it is asking. Means only two sides means one pair of opposite side. Two sides means pair of opposite sides. So in which quadrilateral? So as the options, if you are seeing, rhombus in which both the pairs of opposite sides are parallel. Parallelograms also both the pairs of opposite sides are parallel. In trapezium only one pair of opposite sides are parallel, and in rectangle both the pair of opposite sides are parallel. So our answer is C, which is trapezium. So which one is our answer? Our answer is C, that is trapezium. Right friends? So what? A quadrilateral in which only two sides are parallel means one pair of opposite sides are parallel. So your answer is trapezium, option C. So dear friends, let's see the next question. Question number 2. A quadrilateral has diagonals. So in a quadrilateral, how many diagonals we can draw? So dear friends, a quadrilateral has two diagonals. Your answer is B. Let us see the next Rectangle is a quadrilateral. Rectangle is a which type of quadrilateral? This we are going to ask in this asking. In question number 3. So rectangle क्या है? ये हमें बताना है. Trapezium है कि rhombus है कि kite है कि parallelogram है. तो a rectangle is a parallelogram we have read. Option D is right. Right friends? तो आपको आंसर क्या मिला? रेक्टेंगल क्या है? रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है. आई बात समझ में? गुड. सो लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. सी द क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन 4 इज गिवन, ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम आर नॉट ट्रू फॉर. सो किस ऑप्शन के लिए पैरेललोग्राम की सभी प्रॉपर्टीज एप्लीकेबल नहीं है, ये हमें बताना है. So first rectangle is a parallelogram, this you know better. Rhombus is also a parallelogram. Square is also a parallelogram. But the option D, which is kite parallelogram नहीं होता है. So dear students, answer इसका क्या होगा? Kite. That all the properties of parallelogram are not true for kite. So let's move. Kite means D option is right. So let's move for the next question, number 5. Question 5 tells you that the sum of angles of a quadrilateral is, so dear students, you have read this theorem, sum of all the angles of a quadrilateral is 360 degree. इसको हमने अपने चैप्टर में प्रूव भी करना सीखा है. So our option number C is right for this question. Dear friends, see the question number 6. If all angles of a quadrilateral are equal, then measure of each angle is. So as you know that sum of all 4 angle is 360 degree. So question is saying all the angles are equal, means their sum, what will be the measure of each angle? That is 94 is 360. So हमारा आंसर क्या होगा? 90, which is A option. Right friends? Because 94 is 360 degree. Let's move on the next question. Question number 7. Just see the friends, in this what is given. If the measures of 3 angles of a quadrilateral are equal and the measures of 3 angles of a quadrilateral are equal and the fourth angle is 135
then the measure of those three angles are, measure of those three angles are, ये हमको बताना है, right? They all measure of three angles. Okay friends, so the measure of all three angles are equal. In this there are two options, option B and option C. They both are having equal, but we have to check the sum of all four angles of a quadrilateral, and that is equals to 360. 360 भी होना चाहिए सभी all four angles का sum. So the fourth angle is given 135, and just see the option B. जरा check करते हैं हम. 60 plus 60 plus 60, that is 180. 180 plus 135. 180 plus 135, that is not equals to 360. It means our C option is right. Why? Why C option is right? Because 75 plus or multiplied by 3 plus 135, the sum of these angles is equals to 360. Therefore, those three equal angles are 75, 75 and 75 degree, which is our option number C. Reason समझ में आ रहा है? So friends, with the reason be confirm, then move forward. Let us see the next question, number 8. In this, just see, in a parallelogram, measure angle B is equals to 40 degree. Parallelogram, it is measure angle B is 40 degree and measure angle A is asking. So this angle A and angle B, they both are adjacent angle, and in a parallelogram you know that the sum of adjacent angle is 180 degree, means they are supplementary to each other. Since BC is parallel to AD and AB is a transversal, therefore the same angle on that angles on the same side of transversal are supplementary. Therefore angle B plus angle A plus angle B is equals to 180, and the measure of angle B is given 40 degree. So the measure of angle A is equals to 140 degree. Therefore our option C is right. So dear friends, solution are you getting? समझ में आ रहा है solution? Very good. So let us move on the next question. Number 9. In this, it is given that if a pair of opposite sides is equal, if a pair of opposite side is equal and parallel, equal भी हैं, parallel भी हैं, in any quadrilateral, हाँ, तो ये quadrilateral किस टाइप का quadrilateral हो जाएगा? What is? If a pair of only one pair of opposite side is parallel and equal, then it is a quadrilateral. Which one? Parallelogram, trapezium, kite or square. So this quadrilateral becomes a parallelogram. Right friends? So note down these questions there in your notebook. Let's move on the question number 10. Just see in 10th what is given. Quadrilateral ABCD is a rhombus. Very good. ABCD is a rhombus. Rhombus, you know that in rhombus all the sides are equal and it is a parallelogram. That means rhombus is following the properties of parallelogram, because but one more condition is there, its all sides are equal. Okay. Then diagonal AC and BD intersect at point M. Then question is asking, what is the measure angle AMB? You know that the rhombus means diagonals of rhombus intersect each other at right angle, means diagonals are perpendicular to each other. Therefore the angle between these diagonals AMB is equals to 90 degree. Our option D is right in this question. Right friends? See the next question. Question number 11. In this, what is asking? In this question is asking that the diagonals of quadrilateral is perpendicular to each other. तो किसके डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं? अभी हमने डिस्कस किया प्रीवियस क्वेश्चन में. रोम्बस के डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं. सो देयरफॉर आवर ऑप्शन ए इज राइट. और ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल किसी भी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स परपेंडिकुलर नहीं होते. तो किसका डायगोनल्स परपेंडिकुलर होता है? रोम्बस का डायगोनल
परपेंडिकुलर होता है, राइट फ्रेंड्स. सो मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12th. Dear friends, let's see this question. In this it is given, the diagonals of a quadrilateral do not bisect each other. तो अब किस क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल बाइसेक्ट नहीं करता है? डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल डू नॉट बाइसेक्ट ईच अदर. व्हाट इज द पॉसिबिलिटी? पैरेललोग्राम का डायगोनल बाइसेक्ट नहीं करता, करता है. रोम्बस में भी करता है, रेक्टेंगल में भी करता है. तो ट्रेपीजियम का डायगोनल बाइसेक्ट नहीं करता, इंटरसेक्ट तो करता है बट नॉट एट मिड पॉइंट. मीन्स इट इज नॉट बाइसेक्टिंग, not intersecting at midpoint, right? So let's see the question number 13. Okay friends, so in this question number 13, the opposite angles of which quadrilateral is not equal? Like first option is given, A option trapezium. So trapezium के opposite angles equal नहीं होते, बाकी सभी square, parallelogram और rhombus इन तीनों quadrilaterals के opposite angles equal होते हैं. So our answer is option number A, right friends? Let us move on the next question, question number 14. So in this friends, if a pair of opposite sides of a quadrilateral are equal, what is given? Pair of opposite sides of a quadrilateral are equal, very good. And then it is which type? Pair of opposite side of a quadrilateral is equal. So this are pair of opposite sides of a quadrilateral are equal, then it is which type of a quadrilateral? Is it possible being trapezium? No. In kite. So which option is right? Option number C is right. Means option A is trapezium, not possible. Option B kite, it is also not possible. Option C, in which both the pair of opposite sides are equal. Therefore our required answer is option number C, right friends? So move on the next question. Question number 15. The afterwards blank is given, divides the parallelogram into two congruent triangles. So which is these options, among these options divides the parallelogram into two congruent triangles? तो आपने थ्योरम पढ़ा होगा कि diagonals divides the parallelogram into two congruent triangles. So which option is right in this? Nice, option D is right. Diagonals divides the parallelogram into two congruent triangles. So let's move for the question number 16. So friends, these questions which we have completed, write it there in your notebook with neat and clean and learn the answers of these questions. See the question number 16. In this, out of the following, which is the property of a parallelogram? Very good. So we have read so many properties of parallelogram, which is suitable that we have to give the answer. पहला ऑप्शन क्या दिया गया है? All the sides are equal. तो parallelogram is not mandatory that इसके सभी sides equal ही हो. It's not fixed. अभी जैसे स्क्वायर लेते हैं या फिर हम रोम्बस लेते हैं, सभी साइड्स इक्वल होते हैं और वो पैरेललोग्राम भी होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, ऑल द एंगल्स आर इक्वल. दैट इज ऑल्सो नॉट राइट बिकॉज रेक्टेंगल और स्क्वायर के सभी साइड सभी एंगल्स इक्वल होते हैं. डायगोनल्स बाइसेक्ट द एंगल, पैरेललोग्राम में ये भी पॉसिबल नहीं है. डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, यस फॉर द पैरेललोग्राम इट्स डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. ये पैरेललोग्राम के लिए भी एप्लीकेबल है, स्क्वायर के लिए भी एप्लीकेबल है, रेक्टेंगल के लिए भी एप्लीकेबल है, रोम्बस के लिए भी एप्लीकेबल है. सो आर ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन. व्हाट? डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, राइट. सो डियर फ्रेंड्स, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा. हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और उसको डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन नंबर 17. जस्ट सी, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम. इसमें से कौन सा पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी नहीं है, ये हमको बताना है. अभी जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में वी हैव डिस्कस दैट
which one of the following is a property of parallelogram? Now in this we are going to discuss which one among these four options, which one is not property of parallelogram, right? Let us see. Dear students, first option is opposite sides are parallel. पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, मीन्स ये हमारा ऑप्शंस नहीं है. ऑप्शन बी, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं. एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल भी सप्लीमेंट्री होता है. मीन्स ऑप्शन डी, डायगोनल्स बाइसेक्ट एट राइट एंगल. बट इट इज नॉट मैंडेटरी कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स परपेंडिकुलर पे राइट एंगल पे कट करें. ये तो सिर्फ और सिर्फ किस में पॉसिबल है? ये सिर्फ स्क्वायर में पॉसिबल है, रोम्बस में है, लेकिन किसी दूसरे पैरेललोग्राम में ये पॉसिबल नहीं है. देयरफॉर आवर ऑप्शन डी इज द राइट वन. व्हाट? डायगोनल्स बाइसेक्ट एट राइट एंगल. दिस इज ट्रू ओनली फॉर द स्क्वायर एंड रोम्बस. समझ गए आप लोग? Good. So let us move on the next question, number 18th. Okay, just see the students. The diagonals of quadrilateral PQRS bisect at point M. Okay, चलो quadrilateral है और उसके diagonals point M पे bisect करते हैं. Okay, so dear students, of how many figures the diagonals are bisecting? In rectangles also, squares also, parallelograms also, rhombus also, right? Then question is asking PM is equals to, and this information is given, if PM is equals to MQ and RM is equals to MS, तो quadrilateral PQRS becomes, अब ये क्या हो जाता है भाई? PM is equals to MQ, RM is equals to SM, then this PQRS becomes a rectangle. It cannot be a square because they are not perpendicular, means diagonals are not intersecting at right angle, which is not given. That's why this figure becomes a rectangle. मीन्स इट्स डायगोनल्स आर इक्वल. डायगोनल्स इक्वल हो गए. डायगोनल्स तो स्क्वायर के भी इक्वल होते हैं, लेकिन स्क्वायर हमने आंसर नहीं किया. क्यों? क्योंकि स्क्वायर के डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं और ऐसा क्वेश्चन में कहीं पे डिस्कस नहीं है. आर यू गेटिंग व्हाट दैट दिस पॉइंट? ओके, दैट्स व्हाई आवर आंसर इज रेक्टेंगल. इन दिस द डायगोनल्स आर इक्वल. सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर 19. In this it is given, in a parallelogram ABCD, AB is perpendicular to AD. AB, in a parallelogram ABCD, AB is perpendicular to AD. Means one angles become 90 degree. तो अब ये पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा दोस्तों? या तो रेक्टेंगल हो जाता है या तो स्क्वायर है नहीं इसमें. तो हमारा ऑप्शन, in a parallelogram ABCD, AB is perpendicular to AD, then parallelogram ABCD is a rectangle. B option is right. Which option is right in this? B option is right, not C. Its answer is option number B. What? Rectangle. Right friends? आ रही बात समझ में? In a parallelogram ABCD, if AB is perpendicular to AD, then parallelogram ABCD becomes a rectangle. Right? Let's move on the question number 20. Okay friends, just see the diagonal of quadrilateral bisect. The diagonal of which quadrilateral bisect at the angle at end points? Wow, what is the question in this? The diagonals of which quadrilateral bisect the angle at the end point? किस क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स एंड पॉइंट पे बाइसेक्ट करते हैं? मीन्स इज इट परपेंडिकुलर, सॉरी पैरेललोग्राम, इज इट रेक्टेंगल? पैरेललोग्राम इज नॉट, rectangle is also not right, so rhombus is the correct answer because trapezium is also not right.
So which option is right in this? Rhombus means diagonals of rhombus bisect the angle at the end point also. Right friends, so let us move on the question number 21. In this it is given the adjacent angle of which quadrilateral are not supplementary. किस quadrilateral का adjacent angle supplementary नहीं होता है? पैरेललोग्राम का तो होता है, रोम्बस का भी होता है, रेक्टेंगल का भी होता है. इट मीन्स ऑप्शन डी विच इज ट्रेपीजम, इसका एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री नहीं होता. इसमें भी दो पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, लेकिन अदर टू पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर नॉट सप्लीमेंट्री. दैट्स व्हाई आवर आंसर इज ट्रेपीजम. रीजन समझ में आ रहा है ना? गुड. सो लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22. हैज कॉन्ग्रुएंट डायगोनल्स मीन्स किस क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इक्वल होते हैं. कॉन्ग्रुएंट मीन्स इक्वल, तो रेक्टेंगल का इक्वल होता है. वेरी गुड, इक्वल होता है. इट मीन्स यही सही है. ट्रेपीजियम का नहीं होता. पैरेललोग्राम के भी डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, रोम्बस के भी नहीं होते. तो हमारा आंसर कौन सा? ऑप्शन ए, रेक्टेंगल्स है. रेक्टेंगल हैज कॉन्ग्रुएंट डायगोनल्स. राइट फ्रेंड्स, सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23. इज नॉट अ पैरेललोग्राम. कौन सा पैरेललोग्राम नहीं है? स्क्वायर. स्क्वायर तो पैरेललोग्राम है. इसके बोथ द पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल. Rectangle, in this also both the pair of rhombus is also both the pair of opposite sides are parallel. But trapezium is only one pair of opposite side is parallel. That's why trapezium is not a parallelogram. Right friends, let's move on the next question number 24. Friends, let's see the question number 24. In this what is given? First read the question carefully. क्या दिया गया है क्वेश्चन में? A quadrilateral whose diagonals are congruent means diagonals equal हो and bisect each other, मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हो, नॉट एट राइट एंगल, राइट एंगल पे इंटरसेक्ट ना करें. तो ऐसा कौन सा फिगर है? स्क्वायर अगर लेते हैं तो वो राइट एंगल पे करता है, रोम्बस लेते हैं वो भी राइट एंगल पे होता है, ट्रेपेजियम में तो नहीं होता, डायगोनल्स भी इक्वल नहीं होते. इट मीन्स हमारा आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, रेक्टेंगल. जिसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं, बाइसेक्ट भी करते हैं, लेकिन राइट एंगल पे इंटरसेक्ट नहीं करते. दैट्स वाई ऑप्शन ए इज राइट फॉर दिस क्वेश्चन. ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 25. इन दिस गिवन ऑल द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्ग्रुएंट. तो किस क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल इक्वल होते हैं भाई? रेक्टेंगल के. सो देयरफॉर रेक्टेंगल के सभी एंगल 90 डिग्री होते हैं. इट मीन्स ऑल द एंगल्स ऑफ द rectangles are congruent to each other. So let's see the question number 26. A quadrilateral whose diagonals are not congruent. किसके diagonals congruent नहीं होते but bisect at right angle. Equal नहीं होते लेकिन 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं. तो ये रोम्बस ही पॉसिबल है. स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल भी होते हैं, राइट एंगल पे भी इंटरसेक्ट करते हैं. रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं लेकिन राइट एंगल पे इंटरसेक्ट नहीं करते. रोम्बस के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते बट वो राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं. सो आवर ऑप्शन सी इज राइट फॉर दिस क्वेश्चन. राइट फ्रेंड्स? ओके, सो लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 27. अ क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट, डायगोनल्स इक्वल हो, बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल. तो इसका स्क्वायर ही पॉसिबल है जिसके डायगोनल्स इक्वल भी होते हैं और राइट एंगल पे भी इंटरसेक्ट करते हैं. राइट फ्रेंड्स? ओके.